Hello learners, welcome back to my channel. आज हम पढ़िबा B.Ed second semester book Art and Education. So आज रो वीडियो रे मु कवर करिबे A.K कुमारा स्वामी and Herbert read. So आनंद कैंटिस कुमारा स्वामी. Okay? So जो का मैं कहू जे A.K कुमारा स्वामी से बॉर्न हेतले 22 अगस्त 1877 कोलंबो ब्रिटिश साइलोन रे. आउ तांकर मृत्यु हेतला 9 सेप्टेम्बर 1947 70 एज रे यूएस रे. सो नेशनलिटी कोन तांकर ना से अमेरिकन. ही इज नोन फॉर मेटाफिजिशियन एंड फिलोसोफर एंड हिस्टोरियन. तांकर रिलीजन होची हिंदू. सो तांको विषय रे एटा जदी पढिबो ओनली 5 मार्क्स रो पढिबो. ठीक अछि कि तांकर कंट्रीब्यूशन कोन रही छी. सो हम तांको विषय रे जानिबा. सो एके होचंती जन्म ग्रहण करले 22 अगस्त 1877 आ मृत्यु तंकर हेतले 9 सेप्टेम्बर 1947 जोटा हम पढिले एबे. सो से तमिल फिलोसोफर थिले, मेटाफिजिशियन थिले, आ गोटे हिस्टोरियन थिले, से फिलोसोफर ऑफ इंडियन आर्ट थिले. पर्टिकुलरली से माने से जो थिले से आर्ट, हिस्ट्री एंड सिंबोलिज्म रो थिले. ऑल्सो गोटे अर्ली इंटरप्रेटर थिले ऑफ इंडियन कल्चर टू द वेस्ट. In particular, he is described as the groundbreaking theorist who was largely responsible for introducing ancient Indian art to the West. So, तांको मैं कौन पाइन जानी चुका है कि से famous न से ancient art ancient Indian art जो अच्छी ताकू से introduce करते हैं to the West. इटा हो जी main जिंसो. Okay. आ कोन ना एके वाज बोर्न इन कोलंबो जोटा हम एठू पढ़ी आसलु ताकू ही से मेनली डिस्क्राइब करी छी. से बोर्न हितले कोलंबो रे साइलोन रे आ नाउ श्रीलंका जोटा कहा जाउची. साइलोन रा आगो नाम थले श्रीलंका. सॉरी साइलोन सॉरी श्रीलंका रा आगो नाम थले साइलोन. ओके. सो टू द साइलोन सी Tamil legislator and philosopher Sir Muthu Kumar Rai and his English wife Elizabeth B.V. Okay. So his father also गोटे श्रीलंकन तमिल ब्राह्मण थिले. आउ से तांको जे फादर से तांको जे मृत्यु हेतला सेतबे हेतले तबे आनंद 2 years old थिले. ठीक अछि. आनंद spent much of his childhood and education in abroad. ठीक अच्छे. तापरे तांको वर्क्स जोटा कि एटा इम्पोर्टेंट एबे आसला इम्पोर्टेंट जिंसो तांकर कोन कोन वर्क्स रही छी ना. फिगर्स ऑफ स्पीच और फिगर्स ऑफ थॉट, द ट्रेडिशनल व्यू ऑफ आर्ट, इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट, बुद्धिस्ट आर्ट, गार्डियंस ऑफ द संदूर and history of Indian Indonesian art, teaching of drawing, the Indians craftsmen, and Viva Karma, examples of Indian architecture, sculpture, painting and handicraft. Vidyapati, Bangya, Padavali, songs of the love of Radha and Krishna. And Vidyapati जोटा कि होचे आपणकर राधा कृष्ण का ऊपरे सॉन्ग्स रा थिला. द मिरर ऑफ गेस्चर बीइंग द अभिनय दर्पग ऑफ नंदी क्यूनुवरा, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस रो थिला एटा. देन इंडियन म्यूजिक, देन अ कैटलॉग ऑफ स्कल्पचर्स बाय जॉन मोब्रे क्लार्के शोन एट द केवोरिकियन गैलरीज. देन राजपूत पेंटिंग एंड अर्ली इंडियन आर्किटेक्चर. सो आंको विषय रे एतिकी आउ जस्ट आउ अल्प. The origin of Buddha image, the door in the sky, the transformation of nature in art, bronze from Ceylon, early Indian architecture, the arts and crafts of Indian, Christian and Oriental philosophy art. So ये जे अच्छी टा मन रखिया बहुत कष्ट. ओके. एते जिंस तो मन रही बनी. सो मु गोटे इजी वे कहि दोछु जेंति आपण मन रख पारिबे. जस्ट मु आपन पाइटा पूरा रीड करली तक आपण बुझी पारिबे कोन कोन अछि. सो मेनली जला आपण स्टार्ट करूछंती लिखुछंती. फर्स्ट आपण एकेरो फुल फॉर्म टा लिखतेबे. आनंद कैंटिस कुमारा स्वामी. ठीक अछि. एटा जेंति लेखाइ छि सेमति लेखिबे. बोर्न, डाइड, नेशनलिटी, नोन फॉर एंड रिलीजन. एटा आपण को रहिबो. तापरे एटा जहा अछि सेटा को आपण एक्सप्लेन कर देबे. गोटे जिंस ऐड करिवे एटा. इन पर्टिकुलर ही इज डिस्क्राइब्ड एज द ग्राउंड ब्रेकिंग थियोरिस्ट हु वाज लार्जली रिस्पांसिबल फॉर इंट्रोड्यूसिंग एंशिएंट आर्ट टू द वेस्ट. एतिके हम लिखिले.
एटारे जहाँ अच्छी किछटा पुणी एठी भी अच्छी ठीक अच्छे जमी देखो बर्न इन कोलंबो ओके तापरे तांको वाइफ को नाम भी अपन लिखिबे तापरे तांको जे फादर तांको जे मृत्यु हो जाइतला से 2 वर्षर थिले सेटा लिखिले एतिकी आपण पे इजी तापरे जे वर्क्स अच्छी ट्रेडिशनल आर्ट सेटा एते गुड़ा अच्छी देखंतु एठू एतिकी एते गुड़ा मन रखिबो संभव नुए तो मु जो जोडा कोजे सेटा आपण लिखि नेबे सेटा आपण पे इजी होबो सो फर्स्ट आपण एटा मन रख परिबे फिगर्स ऑफ स्पीच और फिगर्स ऑफ थॉट द ट्रेडिशनल व्यू ऑफ आर्ट एटा गोटे मन रख परिबे इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट बुद्धिस्ट आर्ट ठीक अच्छे ये 3टा मन रहा देन आपण को एटा मन रखिबे हिस्ट्री ऑफ इंडियन एंड इंडोसियन आर्ट तापरे आपण मन रखिबे टीचिंग ऑफ ड्राइंग इन साइलोन द इंडियन क्राफ्ट्समैन एगुड़ा आपण मन रखिबे इजी तापरे तळगु पळे आसबे एठी इंडियन म्यूजिक तापरे एठी राजपूत पेंटिंग अर्ली इंडियन आर्किटेक्चर जोटा सिटीज और सिटी गेट्स अच्छी एटा एतिकी रखि रखले बना तापरे एठू द ओरिजिन ऑफ द बुद्ध इमेज द डोर इन द स्काई एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेचर इन आर्ट अर्ली इंडियन आर्किटेक्चर एंड द आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स ऑफ इंडिया आउ एटा क्रिश्चियन एंड ओरिएंटल फिलोसफी ऑफ आर्ट ये जोगुड़ा हम पढ़ी एगुड़ा टिके मन रखियो सहज तो आपण स्टार्टिंग रे एटा लिखि देले जोटा आपको इंट्रोडक्शन अच्छी लिखदेले ताकू ही टिके एक्सप्लेन कर देले तंको वाइफ का और तंको फादर को डेथ केमती हितला लिखिले वर्ड्स रे जोगुड़ा मु कहिले सेगुड़ा इजी अछि सेगुड़ा ही लिखि देबे हर्बर्ट रेड आ विषय मु पढ़ी दोची तापरे मु आपनको स्लाइटली तारो केमती कोन लिखिबे मुटा कहि देबे सो सर हर्बर्ट एडवर्ड रेड डीएसओ एमसी 4 डिसेंबर 1893 12 June 1916 এটা তাঙ্কর জন্ম ও মৃত্যু কহাইজি he was an English anarchist poet and literary critic best known for numerous books on art which included influential volumes on the role of art in education. Reid was co-founder of the Institute of Contemporary Arts. He was one of the earliest English writers to take notice of existentialism. ठीक अछि सो कौन कहते जन्म होता डिसेम्बर 4 1893 यूनाइटेड किंगडम यूके रे एंड मसाकोट्स से जन्म होता अच्छा मृत्यु केबे होता ना जून 12 1968 स्टोन ग्रेव यूनाइटेड किंगडम तांको स्त्री को नाम थिला एविलियन रेड और चिल्ड्रन को नाम थिला जॉन रेड आउ से बाकी किसी लिखी नांती सो एटा आपण स्टार्टिंग रे लिखिबे ठीक अछि तापरे सेटा को हेटी एक्सप्लेन कर देबे एटा गोटे लिखिबे ही वाज एन इंग्लिश एनर्जिस्ट पोएट लिटरेरी क्राइट बेस्ट नोन फॉर न्यूमरस बुक्स ऑन आर्ट एतिके आपण लिखिबे ताकर क्यूटोस को लिखिबे कोन कोन देछि द स्लेव मे बी हैप्पी बट हैप्पीनेस इज नॉट एनफ प्रोग्रेस इज मेजर्ड बाय द डिग्री ऑफ डिफरेंशिएशन विद इन ए सोसाइटी Progress is measured by richness and intensity of experience by a wider and deeper appreciation of the significance and scope of human existence. तापरे तारो तांकरो early life केमती थिला The son of a farmer, Reid was born at Massachusetts near Nunangiton, about 4 miles south of Kirkby-Morside in the North Riding of Yorkshire. His studies at the University of Leeds were interrupted by the outbreak of the First World War, during which he served with the Green Hussars in France. He received the Military Cross and Distinguished Service Order and reached the rank of captain. During the war, Reid was founded the journal Arts and Letters with Frank Rutter, one of the first literary periodicals to publish work by T.S. Eliot. तापरे वर्क्स तंकर कौन कौन अच्छी ना इन 1931 perhaps his most famous book on art The Meaning of Art appeared. It was followed by Art Now, an introduction to the theory of modern painting sculpture in 1933 and art and industry in 1934. Reid left the university in 1932 to edit the Burlington magazine. During these years, he lived in Hampstead and came to know many of the artists whom he would champion in later years. His Art and Society appeared in 1937. Anarchy and
order in 1945. Perhaps most influential books because of the numerous translations was his 1943 Education Through Art, essentially a manifesto of the anarchism Reed embraced. After the war, Reed joined the book publishing firm of Routledge and King and Paul, where he edited a series of English master painters. Together with Ronald Berners, he founded the Institute of Contemporary Arts, ICA, in 1947. So, एटा तांको विषय रे तांकर क्वाड तांकर अर्ली लाइफ एंड वर्क जोटा को मैं रीड करली. सो अबे आपन को लिखिबे केमती, बिकॉज एटा को मन रखिया बहुत डिफिकल्ट. এটা গপ তো ହେଇନି କି ଆପଣ ମନେ ରଖିଦେବେ. ସो ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଇଜି ୱେ କହିଦେଉଛି. ଏଇଟା 5 ମାର୍କସରୁ ଆସିବ. ହର୍ବର୍ଟ ରିଡ୍ ବିଷୟ ଯଦି ଆସିବ, ସୋ କେମିତି ଲେଖିବେ? ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣ ଲେଖିବେ ହର୍ବର୍ଟ ରିଡ୍ର ଫୁଲ୍ ନେମ୍, ସର୍ ହର୍ବର୍ଟ ଏଡୱାର୍ଡ ରିଡ୍. ଲେଖିଦେଲେ. ତାଙ୍କର ବର୍ନ, ଡାଏଟ୍, ସ୍ପାଉସ୍, ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଲେଖିଦେଲେ. ତାପରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ ସେ କ'ଣ ଥିଲେ. ସେ ଗୋଟେ ଇଂଲିଶ ଆନାର୍ଚିଷ୍ଟ ଥିଲେ, ପୋଏଟ୍ ଥିଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଲିଟରାଲି କ୍ରିଟିକ୍ ଥିଲେ. तापर लिखिबे ही वाज बेस्ट नोन फॉर न्यूमरस बुक्स ऑन आर्ट, जोटा को इंक्लूड करूछु इन्फ्लुएंशियल वॉल्यूम्स ऑन द रोल ऑफ आर्ट इन एजुकेशन. लिख देले. तापर पॉइंट लिखिबे रेड वाज को फाउंडर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ कंटेम्परेरी आर्ट्स. ही वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट इंग्लिश राइटर्स टू टेक नोटिस ऑन एक्सटेंशनलिज्म. एतिके हे गला. एटा लिखिले पुणी एटा लिख देबे. क्वार्टर्स तीनटा देछि. एई दिटा मन रखिबा टी इजी अछि. एई दिटा लिखि देबे. एटा आपण छाड़ दी पारंती. तापर ताको अर्ली लाइफ विषय लिखिबे कि से गोटे फार्मर रो पुओ थिले, से कोठी रहुथिले, ठीक अछि. ताको स्टडीज कोठी थिला, से कौन रिसीव करिथिले, ठीक अछि. से सब लिखि देबो अल्प अल्प. तापर वर्क्स को आसीबे. वर्क्स 1 बाय 1 जेमति म कहिली से सब 1 बाय 1 करके लिखि देबे. देन कंक्लूजन आसीबो, ठीक अछि. सो आज रो वीडियो रे मु दुटा कवर करली, आनंद कैंटिस, कोमार स्वमी and Herbert Reed. Thank you.